हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 6 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी inaugurates RAISE 2020, a mega virtual summit on artificial intelligence. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated RAISE 2020, a mega virtual summit on artificial intelligence on 5th October 2020. RAISE, जिसका मतलब है Responsible AI for Social Empowerment 2020 summit has been organized by the Ministry of Electronics and Information Technology, इसे मैती भी कहा जाता है, and नीति आयोग from October 5th to 9th 2020. Puducherry Airport becomes AAI's first 100% solar-powered airport. The Puducherry Airport has become the first airport of the Airports Authority of India, which is entirely solar-powered. पुडुचेरी एयरपोर्ट इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है जो सोलर पावर से चलेगा, मतलब सोलर एनर्जी से चलेगा। The 500 kilowatt power ground-mounted solar power plant was commissioned on 2nd October 2020. The approx cost of the plant is rupees 2.8 crore. Number 3. DRDO successfully flight tested supersonic missile-assisted release of Torpedo Smart off Odisha Coast. On 5th October 2020, the Defense Research and Development Organization (DRDO) successfully flight tested the supersonic missile-assisted release of Torpedo from Wheeler Island off the coast of Odisha. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया सुपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया जो अपने अंदर एक टॉर्पीडो को लेके उड़ सकता है। वो टॉर्पीडो एक तरीके का मिसाइल होता है जो सबमरीन्स को मारने के लिए काम आता है। जब सबमरीन्स समुद्र के अंदर लड़ते हैं तो उन लोग जो मिसाइल छोड़ते हैं उसे टॉर्पीडो कहा जाता है। तो स्मार्ट एक नया प्रोग्राम है, नया मिसाइल है, एआई मिसाइल कह सकते हैं, जो मिसाइल के अंदर टॉर्पीडो होता है। वो मिसाइल पहले आसमान में उड़ेगी और वो वहां से सबमरीन का लोकेशन का पता लगाएगी और फिर वो डायरेक्टली सबमरीन की तरफ जाएगी। पानी के अंदर जाते ही, समुद्र के अंदर जाते ही वो अपने अंदर रखे हुए टॉर्पीडो को रिलीज कर देगी और वो टॉर्पीडो डायरेक्टली सबमरीन को जाकर हिट करेगी। तो स्मार्ट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare operations for far beyond torpedo range. Number 4. Veteran Samajwadi Party leader and former MLC Mulayam Singh Yadav passes away at 92. Three-time member of Legislative Council and veteran Samajwadi Party leader from Auraiya, Mulayam Singh Yadav has passed away after a prolonged illness. He was 92 years of age. Number 5. PNB to add 4,000 jobs. Open 500 branches in FY2Y. FY2Y का मतलब होता है Financial Year 2021. Public sector leader Punjab National Bank, which has set its sights on the south and west for expansion, will open about 500 branches and add about 4,000 jobs during the current fiscal, said its MD and CEO CHSS Mallikarjuna Rao. इन्होंने कहा है कि 2021 फिस्कल ईयर में पीएनबी वेस्ट और साउथ में 500 ब्रांचेस ओपन करेंगे और 400 जॉब्स दी जाएगी। नंबर 6. Very high risk category introduced in mutual fund schemes. SEBI on Monday revamped the product labeling on mutual fund schemes under the riskometer by introducing very high risk category to warn investors. जैसे कि हम लोग को पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कभी कभी बहुत रिस्क की बात होती है, बहुत रिस्की भी होता है। तो पहले का जो 5 कैटेगरीज था वो था लो टू मॉडरेट, फिर मॉडरेटली हाई एंड देन हाई। लेकिन अभी एक और कैटेगरी जो हाई के बाद ऐड किया गया है वो है वेरी हाई रिस्क, और ये ऐड किया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, SEBI। नेक्स्ट,
Indo-French to launch constellation of maritime surveillance satellites to trace illegal oil spillage in IOR. India and France have collaborated to jointly launch the constellation of maritime surveillance satellites for the Indian Ocean region to trace illegal spillage of oil by ships. समुंदर में शिप्स कितने ज़्यादा ऑयल स्पिल करती है सभी को पता है, और उसके वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है और वाटर में रहे इकोसिस्टम को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है. सो इंडिया एंड फ्रांस हैव कोलैबोरेटेड, जॉइंटली कोलैबोरेट किए कि एक सैटेलाइट सिस्टम करेंगे जो ऊपर से इंडियन ओशन रीजन में नज़र रखेगी और जो शिप इलीगली ऑयल स्पिल कर रहे हैं उन्हें पकड़ेगी. The satellite will be the first space-based system in the world capable of tracking ships continuously. और ये सबसे पहला स्पेस बेस्ड सिस्टम होगा वर्ल्ड में जो स्पेस से शिप को ट्रैक करेगी. 8. 1 in 10 people may have contracted COVID, says WHO. The head of emergency at the World Health Organization says its best estimates indicate that roughly 1 in 10 people worldwide may have been infected by the coronavirus, more than 20 times the number of confirmed cases, and warned of the difficult period ahead. एक से 10 में से एक इंसान को 20 से ज़्यादा बार कोविड हो सकता है, और ये स्टडी से पता भी चला है कि ऐसा हुआ भी है. सो हु ने सबको सावधानी बरतने को कहा और ये कहा कि आगे बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड है. नंबर 9. श्रीलंका सीज अ सडन स्पाइक इन COVID-19 cases. Months after successful containing the spread of the coronavirus, Sri Lanka on Monday reported a sudden spike in COVID-19 cases, whose source remains unclear, raising questions over possible community transmission that authorities have so far denied. Number 10. Virus researchers get Nobel for medicine. The Nobel Assembly of Karolinska Institute announced the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine on 5th October 2020. The award has been jointly conferred upon Harvey J. Alter and Charles M. Rice of America and British scientist Michael Houghton for the discovery of hepatitis C virus. हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉक्टन को नोबेल प्राइज दिया गया है क्योंकि वो लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया. The trio made decisive contribution to the fight against blood-borne hepatitis, a major global health problem that causes cirrhosis and liver cancer in people around the world. 11. US-made F-16 jets are being used against Armenians. Armenian leader asks Trump's NSA Robert O'Brien if the planes were given to bomb peaceful villages. अर्मेनिया के लीडर डोनाल्ड ट्रंप के NSA जो है उन्होंने कहा कि क्या आप लोग प्लेन इसलिए बना रहे हैं कि वो अर्मेनियन के पीसफुल विलेजेस में बॉम्ब फेंके. न्यूज़ रिपोर्ट सेड्स the force of Armenia and Azerbaijan, both formed Soviet republics, exchanged rocket fires with missile falling on Azerbaijan's second largest city, Ganja, and on the Armenian controlled capital of Nagorno-Karabakh. Each side accused the other of targeting. दोनों एक दूसरे को ही टारगेटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को ही अक्यूज कर रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, और ये कहते हैं नहीं ये तुम्हारी गलती है. Last point is about the days. And 6th October is German American Day. German American Day क्या होता है? It celebrates German American heritage and commemorates the founding of Germantown, Pennsylvania, now part of Philadelphia in 1683. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो पे. थैंक यू.